इस इवेंट की असली पहचान, आन बान शान जो कुछ भी है, आप सब लोग हैं। आपका इस पर्व में सम्मिलित होना हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। We are celebrating this event in the beautiful city of Bangalore. I wish to thank the Chief Minister, Siddaramaiah ji, and his entire government for his assistance and efforts in organizing this event and making it a big success. It is my particular pleasure to welcome Excellency, the Prime Minister of Portugal, the Vice President of Suriname, the Honorable Ministers from Malaysia and Mauritius to the event. Their achievements, the name they have earned in their own societies and globally are a great inspiration for all of us. It also reflects the success, glory, and enterprise of Indian diaspora the world over. There are over 30 million overseas Indians living abroad. Their footprint is all over the world. But Indians abroad are valued not just for their strength in numbers. They are respected for the contributions they make to India and to the societies and countries where they live. In foreign lands and communities across the globe, irrespective of the path they take and the goals they pursue, the Indian diaspora represents the best of Indian culture, ethos, and values. Their hard work, discipline, law-abiding, and peace-loving nature are role models for other immigrants communities abroad. आपकी प्रेरणा कई प्रकार की है, आपके उद्देश्य अनेक है, आपके मार्ग भिन्न भिन्न है, हर किसी मंजिल भी अलग है, लेकिन हम सबके भीतर एक ही भाव विश्व है और वो भाव जगत है भारतीयता। प्रवासी भारतीय जहां रहे उस धरती को उन्होंने कर्मभूमि माना और जहां से आए उसे मर्म भूमि माना। आज आप उस कर्मभूमि की सफलताओं को उसकी गठरी बांध करके उस मर्म भूमि में पधारे हैं जहां से आपको आपके पूर्वजों को अविरत प्रेरणा मिलती रही है। प्रवासी भारतीय
जहां रहे वहां का विकास किया और जहां के हैं वहां भी अपना अप्रतिम रिश्ता जोड़ करके रखा, हो सके उतना योगदान किया। फ्रेंड्स, फॉर माय गवर्नमेंट एंड फॉर मी पर्सनली, engagement with the overseas Indian community has been a key area of priority. I have met and spoken to hundreds of thousands of our brothers and sisters during my travels abroad in USA, UK, Australia, South Africa, UAE, Qatar, Singapore, Fiji, China, Japan, South Korea, Kenya, Mauritius, Seychelles, Malaysia. As a result of our sustained and systematic outreach, there is a new energy, keen desire, and strong drive among Indian diaspora to connect more extensively and deeply with India's social and economic transformation. The remittance of close to $69 billion annually by the overseas Indians makes an invaluable contribution to the Indian economy. प्रवासी भारतीयों में देश के विकास के लिए अदम्य इच्छा शक्ति है। वे देश की प्रगति में सहयात्री हैं, को ट्रैवलर हैं। हमारी विकास यात्रा में आप हमारे एक वैल्यूएबल साथी है, पार्टनर है, स्टेक होल्डर है। कभी चर्चा हुआ करती थी ब्रेन ड्रेन, हर कोई सवाल पूछता था ब्रेन ड्रेन, और मैं उस समय लोगों को कहता था, तब तो न मुख्यमंत्री था न प्रधानमंत्री था, जब लोग कहते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो मैं कह रहा था क्या बुद्धू लोग ही यहां बचे हैं क्या? लेकिन आज मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हम लोग जो ब्रेन ड्रेन की चर्चा करते थे, वर्तमान सरकार के इनिशिएटिव उस ब्रेन ड्रेन में से भी ब्रेन गेन के लिए है। हम ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलना चाहते हैं, और वो सब आप सबकी सहभागिता से ही संभव होने वाला है और होके रहने वाला है, ये मेरा विश्वास है। NRIs and PIOs have made outstanding contribution to their chosen fields. Among them, there are politicians of stature, scientists of repute, outstanding doctors, brilliant educationalists, economists, musicians, famous philanthropists, journalists, bankers, engineers, and lawyers. And sorry, did I mention our well-known information technology professionals? Tomorrow, 30 overseas Indians will receive from the President the
prestigious Pravasi Bharatiya Samman Awards, which recognize contributions made by them in various fields, both in India and abroad. Friends, irrespective of their background and profession, the welfare and safety of all Indians abroad is our top priority. For this, we are strengthening the entire ecosystem of our administrative arrangements. Whether it is on loss of their passports, need for legal advice, medical assistance, shelter, or even transportation of mortal remains to India, I have directed all Indian embassies to be proactive to address problems of Indian nationals abroad. Our response to the needs of the Indian nationals overseas is defined by accessibility, sensitivity, speed, and promptness. 24/7 helplines by Indian embassies, open house meetings with Indian nationals, consular camps, Twitter Seva for passport services, and use of social media platforms for immediate access are some of the measures that we have put in place to convey a clear message that we are there for you when you need us. The security of Indian nationals abroad is of utmost importance to us. हम पासपोर्ट का कलर नहीं देखते हैं, खून का रिश्ता सोचते हैं. In institutions of distress faced by Indian nationals, we have reached out to ensure their safety, rescue, and repatriation. Our External Affairs Minister, Srimati Sushma Swaraj ji, has particularly been proactive and prompt in reaching out the distressed Indians abroad using social media. Under Operation Sankat Mochan in July 2016, we evacuated over 150 Indian nationals from South Sudan within 48 hours. Prior to that, we evacuated several thousands of our citizens from conflict situations in Yemen in well-coordinated, smooth and swift cooperations. In the last 2 years, 2014 and 2016, we facilitated the repatriation of over 90,000 Indian nationals from nearly 54 countries. Through the Indian Community Welfare Fund, we have assisted more than 80,000 Indian nationals abroad who were in contingency situations. Our aim is that for every Indian abroad, home should never be far away. हम लोग छोटे थे तब सुनते थे मामा का घर कितना दूर, तो बोले दिया जले उतना दूर.
भारत कितना दूर उसको लगना चाहिए, दिया जले उतना दूर, इतनी निकट का उसको महसूस होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में क्यों न रहता हो, उसको ये अपनापन महसूस होना चाहिए। फॉर दोज वर्कर्स who seek economic opportunities abroad, our effort is to provide maximum facilitation and ensure least inconvenience. Our motto is सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं। For this, we have streamlined our systems and taken several measures to safeguard immigration of Indian workers. About 6 lakhs engineers, immigrants have been granted immigration clearance online for overseas employment through registered recruitment agents. Online registration of foreign employers on e-migrate portal has been made mandatory. And the grievances, complaints and petitions of the migrant workers continue to be addressed online through e-migrate and mother platforms. We are also taking strict actions against illegal recruitment agents in India. Prosecution sanctions by CBI or state police against illegal agents, an increase in the amount of bank guarantee deposited by the recruiting agents from rupees 20 lakhs to rupees 50 lakhs. Some of the steps in this direction to ensure that the migrating Indian workers enjoy better economic opportunities. We will shortly launch a skill development program, the Pravasi Kaushal Vikas Yojana, targeted at Indian youth who seek overseas employment. कभी कभी जो पहली बार विदेश जाते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर उनका वहां के देश की आवश्यकता के अनुसार यहीं पर उसका 15 दिन 1 महीने का कोर्स हो, स्किल डेवलपमेंट हो, मान लीजिए वो किसी देश में हाउसकीपिंग के काम के लिए जा रहा है, अगर यहां उसकी ट्रेनिंग होगी तो बड़े विश्वास के साथ जाएगा। और इसलिए ये प्रवासी कौशल विकास योजना, भारत से बाहर जाने वाले लोग एक वैल्यू एडेड अवस्था में जाएं, जिसके कारण एक नया विश्वास पैदा हो, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और उससे मुझे लगता है जो गरीब तबके के लोग छोटे छोटे काम करने के लिए जा रहे हैं, उनको ज्यादा लाभ होगा। कुछ लोगों को उस देश के कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ उस देश की मैनर्स है, कुछ कल्चरल चीजें सीखने की जरूरी होती हैं, वो भी कितने ही पढ़े लिखे व्यक्ति क्यों न हो, उसको काम आती हैं। उस पर भी हम बल दे रहे हैं, जिसको हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं जिसके कारण भारत का व्यक्ति विश्व में पैर रखते ही उसको कुछ भी पराया न लगे, औरों को भी वो अपना लगे और उसका आत्मविश्वास उस ऊंचाइयों को पार करने वाला हो, जैसे वो सालों से उस भूमि को जानता है, वहां के लोगों को जानता है, वो तुरंत ही अपने आप को सेट कर सकता है। तो उस रूप में उसकी चिंता व्यवस्था हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वी हैव स्पेशल बॉन्ड विद द इंडियन डायस्पोरा which is living in the Girmitia countries, who are deeply and emotionally attached with their place of origin. We are aware of difficulties faced by persons
of Indian origin from these countries in obtaining an OCI card if they moved abroad 4 or 5 generations ago. We acknowledge their concerns and have made efforts to address these issues. I am glad to announce that starting with Mauritius, we are working to put in place new procedures and documentation requirements so that the descendants of Girmitias from this country could become eligible for OCI cards. We remain committed to addressing similar difficulties of PIOs in Fiji, Reunion Islands, Suriname, Guyana, and other Caribbean states. Like my request at the last Pravasi Bharatiya Divas, I would again encourage all PIO card holders to convert their PIO cards to OCI cards. मैं बोल तो रहता हूं, आग्रह भी करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत व्यस्त हैं और इसके लिए ये शायद काम रह जाता है. तो आपकी इस व्यस्तता को देखते हुए आई एम हैप्पी टू अनाउंस that we have extended the deadline for such conversion from 31st December 2016 until June 30, 2017 without any penalty. From least of January this year, beginning with airports in Delhi and Bangalore, we have also set up special counters and immigration points in our airports for OCI cards holders. Friends, today there are about 7 lakh Indian students pursuing academic programs abroad. और मुझे भली भांति ज्ञात है कि विदेश में रह रहा हर भारतीय भारत की प्रगति से जुड़ने के लिए आतुर है. उनका ज्ञान, विज्ञान और भारत के ज्ञान का मिलन भारत को आर्थिक प्रगति को असीम ऊंचाइयों पर ले जाएगा. मेरा सदैव यह प्रयास और विश्वास रहा है कि सक्षम तथा सक्सेसफुल प्रवासियों को भारत की विकास गाथा से जुड़ने का संपूर्ण मौका मिलना चाहिए. खासतौर से विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्रों में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं. वन ऑफ देम इज दैट द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लॉन्चिंग विजिटिंग एडजंक्ट जॉइंट रिसर्च फैकल्टी or Vajra scheme which enables NRIs and overseas scientific community to participate and contribute to research and development in India. Under the scheme, an overseas Indian can work for 1 to 3 months in an institution in India, and that too at good terms. और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रवासी भारतीय इसके द्वारा देश की प्रगति का एक अहम हिस्सा बन सकता है. फ्रेंड्स, इट इज माय फर्म बिलीफ दैट कनेक्ट बिटवीन इंडिया एंड ओवरसीज इंडियंस should be sustained and enriching for both. To meet this goal, in October last year, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर
I had the honor of inaugurating the Pravasi Bharatiya Kendra in New Delhi. This Kendra is dedicated to the overseas Indian community. We want it to become a symbol of the global migration experiences, struggles, achievements, and aspirations of the Indian diaspora. I am confident that the Kendra will become another important platform for crystallizing ongoing efforts of the government to redefine its engagement with the overseas Indian community. Friends, हमारे प्रवासी भारतीय कई पीढ़ियों से विदेशों में हैं। हर पीढ़ी के अनुभव ने भारत को और सक्षम बनाया है। जैसे एक नए पौधे पर हमारे भीतर अलग से एक स्नेह उभर आता है, उसी तरह विदेश में रह रहे युवा प्रवासी भारतीय भी हमारे लिए अनमोल है, विशेष है। हम प्रवासी भारतीयों की युवा पीढ़ियों से, यंग प्रवासी से करीबी और मजबूत और संपर्क और गहरा बनाना चाहते हैं। To provide the young Indian origin youth an opportunity to visit their motherland and reconnect with their Indian roots, culture, and heritage, we have expanded the government's Know India program, under the which, for the first time, 6 groups of young overseas Indians are visiting India this year. I'm very happy to know that 160 of these young overseas Indians are here today to participate in the Pravasi Bharatiya Divas. A special welcome to the young Pravasi. I hope that on returning to your respective countries, you will remain connected with us wherever you are and visit again and again India. Last year, the first edition of the online quiz competition for young overseas Indian called Bharat Ko Jano saw participation more than 5,000 young NRIs and PIOs. In the second edition this year, I hope to see the participation of at least 50,000 young overseas Indians. Young friends, will you please help me in this mission? Will you please help me in this mission? Are you ready to work with me? Then why we can stop at 50,000? फ्रेंड्स, आज भारत एक नई प्रगतिशील दिशा की ओर अग्रसर है। ऐसी प्रगति जो न केवल आर्थिक है, अपितु सामाजिक, राजनैतिक और शासकीय भी है। आर्थिक क्षेत्र में पीआईओज तथा एनआरआई के लिए एफडीआई नॉर्म्स पूरी तरह लिबरलाइज है। और एफडीआई की मेरी 2 परिभाषाएं हैं। One definition is FDI means foreign direct investment, and second is first develop India.
investment by POS, non-repetition basis, and by companies, trusts and partnerships owned by them are now deemed to be a domestic investment at par with investment made by resident Indians. हमारे कई ऐसे प्रोग्राम हैं जैसे स्वच्छ भारत, मिशन डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जिनसे प्रवासी भारतीय भारत के सामान्य व्यक्ति की प्रगति से सीधा जुड़ सकते हैं. There are some amongst you who would like to contribute in businesses and investments. Others may feel more comfortable supporting through contributions made to Swachh Bharat, Namami Gange and others. Some others may feel motivated to spare their valuable time and efforts in volunteering in India, helping the underprivileged or contributing to capacity building programs in various sectors. We welcome all your efforts that seek to strengthen India's partnership with the overseas Indian community. I also invite you to visit the exhibition in the Pravasi Bharati Divas Convention, PBD Convention, which gives you a glimpse of some of the flagship programs that we have been implementing and see how you can partner with us. Friends, यहां आने के बाद आपने सुना होगा, देखा होगा, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, करप्शन और ब्लैक मनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है. ब्लैक मनी, करप्शन हमारी राजनीति तथा देश, समाज तथा शासन को धीरे 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 खोखला करता रहा है. और ये दुर्भाग्य है कि ब्लैक मनी के कुछ राजनीतिक पुजारी हमारे प्रयासों को जनता के विरोधी दर्शाते हैं. करप्शन और काले धन को समाप्त करने में भारत सरकार की नीतियों का जो समर्थन प्रवासी भारतीयों ने किया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका साधुवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं. Friends, finally, I would like to say that as Indians, we have a common heritage that brings us all together. And no matter where we may be around, the globe, it is that common bond that we are strong. और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो सपने संजो के रखे हुए हैं, आपके सपने हमारे संकल्प है. और हम सब मिलकर के उन सपनों को साकार करने के लिए
अगर व्यवस्था में बदलाव जरूरी हो, अगर कानून नियमों में बदलाव की जरूरत हो, साहसिक कदम उठाने की जरूरत हो, हर एक को साथ लेकर चलने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने की आवश्यकता हो, ये सब करते हुए मैं विश्वास से कहता हूं 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Prime Minister Modi, for, as always, touching the hearts and minds of every Indian, and for your dynamic vision for India's future and India's diaspora. And now, to bring this inaugural ceremony to a close, there's going to be a vote of thanks by General V.K. Singh, Honorable Minister of State for External Affairs. Honorable Prime Minister of India, our honored guest, Prime Minister of Portugal, His Excellency Antonio Costa, Vice President of Suriname, His Excellency Ashwin Adhin, His Excellency and Honorable CM of